फैजान स्टार्ट करते हैं आपका स्नैप फॉर HR फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड योर ब्रांच इज इलेक्ट्रिक. Okay, tell me about yourself, Faizan. Sir, I am Mohammed Faizan from Lucknow. I have completed my schooling from Lucknow CBSE board, and I have completed my B.Tech from Jamia Millia Islamia in 2018. And since then, I have been preparing for PSUs and GATE. You have completed your B.Tech since 2008. 2018. 18. Because since then you are preparing for GATE and PSUs. So now you have qualified the GATE or yes, any sir, exam? I have qualified the GATE. What is your GATE score? Sir, my GATE score is 750. 700. And you are expecting call from Oil India Limited? Yes, sir. Yes, you know, sir, I have qualified the written exam for Oil India Limited, and then I have to give interview in Oil India Limited. So you have been there in preparation since 2018? Yes, sir. Okay, Faizan, what you do when you get bored from study? Sir, basically my favorite pastime has been watching science fiction movies and exploring the some scientific aspects of different things. Latest science fiction movies you have watched? So latest science fiction I haven't watched in this, but I have watched few serials like The Person of Interest. It is based on artificial intelligence. So I have watched it 15 days ago. Okay. Abhi आजकल there have been many series and movies about our scientists. Yes, sir. Have you seen any of them? Yes, sir. I have recently watched Dr. Nambi Narayan movie in rocketry, and I was really inspired by that movie. How he brings the technology from the France to India, and improves the engine which has been created by France, and he goes there with his team and improves their engine and comes back to India and builds his own engine. Sir, it was a great movie. Okay. So what will you contribute being an electrical engineer to Oil India Limited? What will be your job profile? Sir, as mentioned in the advertisement, I have seen that it is senior electrical trainee. So I believe I will be in the in commissioning and planning of the various hardwares that are required to run the oil fields, and so I have been expecting this role in Oil India in electrical engineering, the hardwares commissioning and making the plant running smoothly. Okay. What kind of hardware will be there? Sir, like there can be relays, there can be generators, there can be switches, transformers, and various different things that are required to run the plant. Basically, Oil India Limited, what does the company do in the field of oil sector? So it is a or it is only oil extracting company? Oil exploration company, but it supplies oil also to different parts of India. Oil through what is the comfortable mobility of oil?
through pipeline or through trucks? Sir, I think building pipelines are very costly, but it is a one-time investment. So I think pipelines both have their utilities. And somewhere there can be pipelines, and where pipelines cannot be built, there can be trucks. ओके फैजान, आप लखनऊ से हैं? यस सर। तो पहले आप कोई किस्सा सुनाइए पहले आपका। सर सर अगर से आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जाएं, तो द फर्स्ट कप इफ यू रिसीव फ्रॉम द, मतलब अगर से आपको दुकानदार जब चाय देगा तो आप उसे अपने पास नहीं रखते, यू पास इट ऑन टू द लास्ट पर्सन, and you pass it to the second, and it passes to the third, and it passes to the fourth. So the guy standing in the last is the pehle aap receives first cup, and then second last, then second last. The guy standing in the first nearest to the shopkeeper receives last. So how it is relevant nowadays? It is relevant or no sir, it is very relevant today also. When you go with any of your colleagues and friends, this always happens. First it is always distributed pehle aap. Okay, you have seen Nambi Narayan? Who is the director of Nambi Narayan? Sir, I can't remember the director. I was very much focused on the movie, so I did not see the credits. Okay. लखनऊ का और क्या फेमस है भाई? Anything famous? Sir, in Lucknow you have different cuisines like tunde kababi and biryani, and you have various historical sites like Imambara and Presidency. Imambara, okay. Yes. अभी इमामबाड़ा को वो जनरली पूरा नहीं ओपन करते, वो क्या रीजन है उसके पीछे? क्या वो है अभी उसको कुछ उसके दरवाजे बंद करके रखते हैं, ऐसा क्या है? मतलब सर ऐसा कहा जाता है कि इमामबाड़ा कि अंदर जो है भूल भुलैया है, और उसमें से भूल भुलैया का एक रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है आगरा की तरफ जाता है। तो वो जो रास्ते जाते हैं, तो कई सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि लोग उसमें खोए ना। सो भूल भुलैया इज लाइक यू कांट फाइंड योर वे इनसाइड द भूल भुलैया। सो सम ऑफ द कुछ रास्ते सर बंद कर दिए गए हैं और कुछ ही रास्ते खुले हैं, मतलब कुछ रास्ते जिन पे आप घूम सकते हैं, बट इट इज स्टिल कि आप उसमें भी भूल जाएंगे कि आप किधर से आए थे और किधर से आपको जाना है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। वहाँ पे एक थोड़ा सा एक वेल टाइप की जगह है जिसमें पानी में देख के वो उनके जो एरो तीर चलाने वाले थे वो तीर चलाते थे, वो कुछ है वहाँ पे एक स्पेस ऐसा? सर वहाँ पे वेल जैसा तो नहीं है कुछ। वेल अगर से है भी तो सर लोगों ने उसे ढक दिया होगा, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। चलाते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है पानी में देख के? नहीं सर ये नहीं पता मुझे। ओके फैजान, देखो इंट्रोडक्शन में आपका थोड़ा सा आपने बिल्कुल ही छोटा कर दिया कि क्या बोलते हैं, जब आपने बीटेक ही किया हुआ है उसके बाद कुछ नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपने अपनी स्कूलिंग, ठीक है ना, अपनी फैमिली बैकग्राउंड उसको ऐड कर सकते हैं आप थोड़ा सा। ओके ठीक है, और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आपको अच्छे से, वैसे तो क्योंकि इंटरव्यू में अगर जो डिग्री है फाइनल डिग्री है उसके प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें ऐड करनी है, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, ठीक है ना,
यस सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, यस सर, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा हो गया इसमें, ठीक है। ओके सर, स्कूलिंग के बारे में आपने बताया है, ठीक है, और करेंटली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस और सर, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आपने कोई एग्जाम तो निकाले होंगे कई सारे, ठीक है ना, फाइनेंस, यस सर, यस सर, यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक हाँ, सिलेक्शन। तो वो सब चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि सर मैं एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूँ लेकिन फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, ओके सर, तो आई एम लुकिंग फॉर द ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऐसे ऐड ओके कर सर, सकते हैं। दूसरा, अभी क्या बोलते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में हमें इतना इंटरनल तो पता नहीं होता कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या हो, ठीक है ना, तो उसको लेकर आपने सही बताया कि आई विल बी एसोसिएटेड विद माय कोर ब्रांच, ठीक है ना, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो कोर ब्रांच में मेरे वही आएंगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर्स एंड रिलेज, और ये रिले स्विचेस, ठीक है ना, पंप, मोटर, ठीक है ना, इन्हीं सब से रिलेटेड मेरा वर्क होगा, इनका मेंटेनेंस, इनका इंस्टॉलेशन, इससे रिलेटेड, ठीक है। और कंपनी के उसके बारे में पता होना चाहिए, ऑल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है, कौन सा प्रोजेक्ट करा, नया प्रोजेक्ट क्या है, पुराना प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें यस सर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, और आपने हॉबी बताया तो मूवी बताया, तो मूवी के डायरेक्टर वो स्पेशली इसके बारे में पेपर में भी आ रहा है, वैसे भी चल रहा है कि डायरेक्टर इसके कौन है, डायरेक्टर इसके एक्टर ही इसके डायरेक्टर है, ठीक है ना, ओके सर, क्या नाम है उनका, हर माधवन, आर माधवन, आर माधवन, हर माधवन ही इसके डायरेक्टर भी है, ठीक है ना, ओके सर, तो एक बार देख लेना, फिर भी कंफर्म कर लेना, ये सब चीजें ओके आपको सर, पता है। बस थोड़ा सा यही है, कंपनी के बारे में तो पता ही होना चाहिए, तो बेसिक इसके बारे में, ठीक है, चले, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।